वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और आए दिन कई दिनों से हमारे मुल्क के एकता और अखंडता को और भाईचारगी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे अफराद तैयार हो गए हैं और हमेशा आए दिन इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं। उनमें एक शख्स है जिसका नाम नरसिंहानंद है। वो किसी मंदिर का पुजारी है। उसने हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने पूरी दुनिया को अमन और मोहब्बत सलामती का पैगाम देने के लिए आप आए हैं, आपके ताल्लुक़ से उसने बहुत ही बुरे और गंदे जुमले इस्तेमाल किए हैं। लिहाजा इससे इस्लाम और मुसलमानों को, हिंदुस्तान में रहने वाले बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इंतहाई तकलीफ़ पहुंची है। लिहाजा जो है हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाए ताकि हिंदुस्तान की भाईचारा और यहाँ का सेकुलरिज़म जो है बरकरार रह सके। हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और आइंदा कोई दूसरा जो है हमारे मुल्क के जो सालिमियत के लिए ख़तरा पैदा करने वाली बातें या किसी मज़हब के बानी के ताल्लुक़ से अगरचे बोलता है और ख़ासकर हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बोलता है, तो लिहाजा ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जो है जिन्होंने अपने संविधान के ऊपर उन्होंने शपथ लेके जो है वो आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो लिहाजा उनकी ज़िम्मेदारी है कि मुल्क में रहने वाले हर इंसान की वो हिफाजत फरमाएँ और जो है लिहाजा जो मुल्क की सालिमियत के लिए ख़तरा हो ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई करके उन्हें जेल में भर दिया जाए। अगर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ का एक कानून भी अगर पार्लियामेंट में बना दिया गया तो ये हमारे लिए बहुत ही हमारे सेकुलरिज़म के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ही आला और शानदार बात होगी और इससे हमारा सेकुलरिज़म और ज़्यादा मजबूत होगा। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि फ़ौरन जो है नरसिंहानंद स्वामी को अरेस्ट किया जाए, सख्त से सख्त जो है उसे सज़ा दी जाए। ये मेरे जो है मुतालबा है हुकूमत से। हम सभी हजरात से मैं चाहूँगा कि हमारे जो दूसरे हजरात हैं वो भी अपने व्यूज़ रखें, अपना मुतालबा रखें। खादी नाम सैयद मोहम्मद नवीद, सहरवर्दी, तेगबरहाना, अदोनी। Been requested to speak in English because the idea is this: probably my message or message of everybody present here reach the corridor who are supposed to be taking a decision for such a most indisciplined and such a more critical remark that has been passed by Swami Nandananda Saraswati. I invite your attention to at least those people who are at the helm of affairs of taking care of the administration of the entire country, who are supposed to be the custodian of the peace, who are the custodian of the democracy in the country. What are they doing? This remark has been passed quite some time back. Till now nothing has been done. How long we can have a patience? The existence of Muslims is only on the prestige and the dignity of the messenger, the peace upon him. और अल्लाह और हमारे सरकार की इज्जत, उनका मकाम और उनकी जो मकाम की वजह से हम लोग मौजूद हैं, अगर ये मकाम इस पे कोई चैलेंज करता है, इस पे आवाज़ करता है तो हम मुसलमानों का कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई मकाम नहीं है। हमारा पेशेंस का भी एक लिमिट होता है, पेशेंस का लिमिट अभी क्रॉस हो गया है। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ, this is not illegal, this is not bona fide, is against the constitution. This is completely bringing the indiscipline. It will create a communal harmony disturb. इसको communal rights हो जाएंगे. The development will be in jeopardize. Therefore, if the government doesn't take action against this this crooked gentleman, I hate to call him a gentleman, he's a crooked man who has brought this kind of in bad name to the country. The whole world is laughing at us. What are we doing? As much as he is responsible, I with a full responsibility tell the government is equally responsible for not taking decision, for not taking action. So therefore I request government, if such thing happens either from Muslim, any Muslims calls for disrespect to any community, please catch hold of him and punish him according to the constitution. And he has also probably disrespected one particular community. As you do it to everybody, you must do it to them. And I request, our RDO Sahib is not here,
We had taken a time from him, but anyhow we are leaving behind the memorandum. We are not a ritual. We are expecting an action. We are expecting an action. We are expecting an action. We are expecting an action, and this action has to be reported to us. Otherwise, we'll come back again. Thank you very much. Qazi Altaf Hussain. స్వామి గారు ఈయన చాలా మానవత్వానికి పనికిరాని మనిషి. ఈయన ఒక కులము గురించి, ఒక మతము గురించి, మా ప్రవక్త గురించి మాట్లాడింది. అందుకోసము ఈయన బతికే హక్కు లేదు భారతదేశంలో. ఎందుకు ఇతన్ని అరెస్ట్ చేయాలి? ఇంతవరకు అరెస్ట్ చేయలేదంటే అది ఏమో మాకే అర్థం కావడం లేదు. మేము ఎవరికైనా ఒక మాట చెప్తే వెంటనే అరెస్ట్ చేయడము, పోలీసులు రావడం చేస్తారు. బహిరంగంగా ఇంత ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు. ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నది? వీళ్ళు ప్రభుత్వం యాక్షన్ తీసుకోలేకుండా మనం చేతిలో చట్టం తీసుకుని మళ్ళీ ఆయనకు ఇది చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకోసం ప్రభుత్వంతో కోరుతున్నాము, మీరు వెంటనే అరెస్ట్ చేసి శిక్షించాలి. ఇటువంటి మనుషులు ప్రపంచంలో కానీ ఎక్కడ కానీ బతికేదానికి అస్సలు హక్కు లేదు.